Hello, my students and my friends. Welcome back my YouTube channel. My name is Jignesh Rana. I am working as assistant professor in Mahatma Gandhi Institute of Technical Education and Research Center, which is situated in Navsari, Gujarat. Our college is also affiliated to Gujarat Technology University, Gandhinagar. Today I am giving a presentation on introduction of mechanism machine. A subject name is kinematics and theory of machine. Today I am cover these topics: a straight line motion mechanism, exact straight line motion mechanism, and last one is approximately straight line motion mechanism. Straight line motion mechanism. One of the most common forms of the constraint mechanism is that it permits only relative motion of an oscillatory nature along a straight line. These mechanisms used for this purpose are called straight line mechanism. So these mechanisms are the following two types. Number one, in which only turning pairs are used and in which one sliding pair is यूज. यहाँ पे हमें क्या कहा है, सिर्फ टर्निंग पे यूज करके स्ट्रेट लाइन मोशन मैकेनिज्म बना सकते हैं और दूसरे में ओनली वन स्लाइडिंग पर यूज करके स्ट्रेट लाइन मोशन मैकेनिज्म बना सकते हैं. These two types of mechanism may produce exact straight line motion mechanism or approximate straight line motion mechanism. The principle adopted for mathematically correct or exact straight line motion is described in following figure. Let O be the point. Let O be the point on a circumference of a circle of diameter OP. Diameter OP. Let OA be any chord. Let OA be any chord and B is a point. B is a point on A produce such that OA into OB is equal to constant. Then the locus of point B will be a straight line perpendicular to the diameter OP. Okay, so this is our straight line motion mechanism. कैसे करेंगे होगी कि यहाँ पे OA is a chord and B is a point on a OA produce such that OA into OB is equal to कांस्टेंट. और बी का लोकस हम ड्रॉ करेंगे स्ट्रेट लाइन में, वो तो परपेंडिकुलर डायमीटर ऑफ ओपी के परपेंडिकुलर क्यू में इंटरसेक्टिंग करेगी. नाउ एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन मोशन मैकेनिज्म, पी चैलियर मैकेनिज्म. ओके, पी चैलियर मैकेनिज्म. इट कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड लिंक्स OA1 OA1 and the other straight link O1A, OC, OD, AD, DB, BC and CA are connected by a turning pair at their intersection. The pin at A is constrained to move along a circumference of a circle with the fixed diameter OP by means of the link O1A. तो O1A यहाँ पे क्रैंक बन गई है. ओके, और AC इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू BD इज इक्वल टू DA. ये चारों लिंक की लेंथ इक्वल है. ओके, OC एंड OD यहाँ पे दोनों की लेंथ सेम है. OC इज इक्वल टू OD एंड OO1 फिक्स लिंक्स इज इक्वल टू O1A इज क्रैंक. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे O1A जैसे वो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में रोटेट होगी तो क्या होगा कि जो हमारा जो पॉइंट है B वो स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा. दिस इज अ स्ट्रेट लाइन मोशन मैकेनिज्म.
एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन मोशन मैकेनिज्म। तो यहाँ पे बी देख सकते हैं कि पूरा का पूरा सीधा स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा है। Next, heart mechanism. So this mechanism requires only 6 links as compared with the 8 links required by P-Challier mechanism. Okay, so P-Challier में 8 links है और heart mechanism में 6 links है. It consists of a fixed links OO1. It consists of a fixed links OO1 and other straight link is O1A, FC, CD, DE, EF are connected by a turning pair at a points of intersection. So let FC is equal to DE. FC is equal to DE and CD. CD is equal to EF. Okay? EF. The points O, A and B. Points O, A and B divides the links FC, CD and EF in the same ratio. A little consideration will show that BOCE, B, just 1 minute. A little consideration will show that BOCE is a trapezium and OA and OA and OB are respectively parallel to the FD. So FD is parallel to OA and CE is parallel to OB. Hence OAB is a straight line. तो यहाँ पे OAB एक स्ट्रेट लाइन मूव कर रही है, यानी कि O1 है यहाँ पे फिर से क्रैंक बन गई है. ओके, सो दिस इज आवर Hart's mechanism, straight line, exact straight line motion mechanism. Now next, Scott-Russell mechanism. It consists of fixed member and moving member P of a sliding pair. The straight link PAQ is connected by turning pair to the link OA and the link P. The link OA rotates about a point O, center O. A little consideration will show that the mechanism OAP is the same as the reciprocating engine mechanism, in which OA is the crank and AP is the connecting rod. In this mechanism, straight line is not generated but is merely copy. यहाँ पे स्ट्रेट लाइन मोशन जनरेट इतना नहीं होगा, सिर्फ यहाँ पे इसकी मैकेनिज्म कॉपी की गई है. ओके, सो दिस इज Scott-Russell mechanism. Now approximate straight line motion mechanism. The approximate straight line motion mechanism are the modification of the 4-bar chain mechanism. Following are the important mechanism to give approximate straight line motion. First one is Watt's mechanism. It is a cross 4-bar chain mechanism and was used by Watt for his early steam engine
to guide a piston rod in a cylinder to have an approximate straight line motion. तो यहाँ पे बेसिकली 4 बार चेन का मॉडिफिकेशन है, सिर्फ यहाँ पे लिंक को क्रॉस कर दिया है, क्रॉस 4 बार कर दिया है. ओके, और ये अर्ली स्टीम इंजन यूज में पिस्टन होल को गाइड करने के लिए सिलेंडर में होता था, और इसकी जो मोशन होती है वो अप्रोक्सीमेटली स्ट्रेट लाइन मोशन हमको मिलती है. ओके, so OBA1 is a cross 4 bar chain in which O and O1 is fixed. O1 and O is fixed. In the mean position of the mechanism, links OB and O1A are parallel, and coupling rod AB is perpendicular to O1A and OB. The tracing point P traces out an approximately straight line over certain position of its movement if PB upon PA is equal to O1A upon OB. तभी जाके हमारा P पॉइंट अप्रोक्सीमेटली स्ट्रेट लाइन मोशन मैकेनिज्म में मूव होगा. तो अब यहाँ पे देख सकते if A point moves A dash and B point B dash, so that's B move to P dash. Okay, so this is our approximately straight line motion mechanism, first Watt's mechanism. Now next one is modified Scott-Russell mechanism. So this mechanism is similar to Scott-Russell mechanism, but in this case AP is not equal to AQ. यहाँ पे AP इज नॉट इक्वल टू AQ. यहाँ पे दोनों सेम नहीं है, दोनों की लेंथ अलग अलग है. द पॉइंट P एंड Q आर कंस्ट्रेंट टू मूव इन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शन. यहाँ पे हमारा दो पॉइंट है P और Q, वो दोनों कंस्ट्रेंट मूव हो रहे हैं. किस डायरेक्शन में? एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एंड वर्टिकल, दोनों डायरेक्शन में वो कंस्ट्रेंट मूव हो रहे हैं. ओके, सो लिटिल कंसिडरेशन विल शो दैट इफ इट फॉर्म्स एन इलिप्टिकल ट्रामेल, so that any point A, elliptical trammel, we have already discussed this mechanism in part 1 or 2, so that any point A on PQ traces an ellipse with semi major axis AQ and semi minor axis AP. So if the point A moves in a circle, सपोज हमारा पॉइंट ए सर्कल में मूव हो रहा है, देन फॉर पॉइंट क्यू टू मूव अलोंग एन अप्रोक्सीमेट स्ट्रेट लाइन, द लेंथ ओ ए मस्ट बी इक्वल टू AP square by AQ. AP square by AQ. Now last mechanism is Grasshopper mechanism. This mechanism is also a modification of modified Scott-Russell mechanism. पहले Scott-Russell mechanism थी, फिर उसकी modified Scott-Russell mechanism आई, फिर उसके बाद modified की भी modification यानी कि Grasshopper mechanism. Okay, so with the difference that the point P does not slide along a straight line but moves in a circular arc. With center O. It is a 4-bar mechanism and all the pads are turning pads. In this mechanism, center O and O1 are fixed. The links OA, यहाँ पे आप लिख सकते हैं links OA oscillates about a point O through an angle AOA1, which causes the pin P move along a circular arc with O1 as a center and O1P is the radius. If OA moves in a clockwise direction and A is the intersect with center O, यानी कि OA स्ट्रेट हो जाएगा, तो हमारा पॉइंट P होगा, वो कहाँ मूव होगा? P1 पे मूव होगा. Okay, so the grasshopper mechanism was used in early days as an engine mechanism which gave a long stroke with very short
crank. ओके, सो यहाँ पे हमारा टॉपिक्स ओवर हो रहा है. सो आज today we have discussed about straight line motion mechanism, exact straight line motion mechanism and approximately straight line motion mechanism. Okay, so now let's hope you get very well. You getting it. Thank you. Stay home and stay safe.